स्वर विज्ञान मेरे जय जगन्नाथ। वेलकम टू मेट्स एरिया। नमस्ते सोनू, समस्त शुभ सकाळ। वर्षा भल अच्छी, तुम्हें केमती अच्छ वर्षा? तो पिला माने आसिया पूर्व आम आज क्विक रिविजन टिके करदबा, देखिबा कौन कौन रही कंटेंट एवं तो फास्ट आमर थिला जे केमिकल रिएक्शन आम पढ़ीचे फास्ट। प्रणाम शुभम, गतकाली क्लास हो पारनी, आज भी क्लास लेट रे स्टार्ट है पाखी 50 मिनट लेट, 20 मिनट लेट रे। ओके कुनागिरी, फाइन, यू आर ए फिजिक्स वाला स्टूडेंट, नो इश्यू। हाँ, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रे हमर देखिबा जदी फास्ट रहिछि, मॉडरेट रहिछि, देन स्लो रहिछि, राइट? फास्ट, moderate, slow, basically तुम्हारा rusting of iron comes under slow reaction रे आछि rusting of iron, right? rusting of iron comes under slow reaction। तापर rate of reaction जदि देखिबा, rate of reaction concentration of reactant जेतेबेले बढ़ुछि, rate of reaction तुम्हारा से अनुसार accordingly decrease ही जाउछि। and further in terms of concentration of product, the rate of reaction is increasing। ठीक अछि। तापर हमें देखते रेट इज इक्वल टू 1 by m into rate of disappearance of A, which is equal to 1 by n into rate of disappearance of B, which is equal to rate of formation of C, if the reaction is Ma plus Nb gives rise to C। And we had already discussed some questions related to it. Then further we started the rate expression and rate constant। So rate is equal to k multiplied over concentration of A to the power x multiplied by concentration of B to the power y, and what is x and what is y? X and y determines the order of reaction, that is x plus y। Further we had solved many questions related to this section। And next, factors affecting rate of reaction. First is your nature of the reactant, then concentration, catalyst, temperature, surface area, radiation। If we consider about the ionic bond, then the reaction is very faster as compared to the covalent or molecular bond। Further, we have also studied that if it has a stable electronic configuration, the reaction becomes slower as compared to the less stable one। And the internal structure of the molecule, that is the bond order, also determines the reactivity। So more the bond order, more is the stability and less is the reactivity। And concentration of reactant, the more the concentration, more is the reactivity। If we add a catalyst, the reactivity of a reaction can increase or decrease। If it decreases, it is known as inhibitor। Okay,
Then by increasing temperature by 10 degrees Celsius, generally the kinetic energy also increases as well as the rate constant increases by twice or thrice. We have already discussed some problems related to temperature coefficient, which is equal to kT plus 10 divided by kT. And if we increase the temperature by 10n times, then it will be like this, that kT plus 10n by kT is equal to mu to the power n. What is mu? Mu is the temperature coefficient. And what is n? N is determined by n is equal to T2 minus T1 divided by 10. Good morning, Subhasis. Please share among your friends and ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ class କୁ ଆସିବା ପାଇଁ. And surface area, more the surface area, more is the reactivity. Similarly, जो गुड़ाक तुम्हारा radiation थिबो, radiation रे इन्वॉल्व करी थिबो, radiation specific reaction थिबो, से गुड़ाक radiation पड़िबा द्वारा reactivity बढ़ता है. Molecularity होची तुम्हारा number of molecules, reactant molecules that involved in the slow step of the reaction. आउ इथिबा हमको slow step जीवा पड़िबो. आउ एटा केबे 0 होई न थाए बा फ्रैक्शन होई न थाए, 3 to अधिका होई न थाए. Order is the number of reacting molecules whose concentration actually decreases, or we can also say that the total power concentration terms of the reactant in the rate equation is known as order of the reaction. We had already seen this, that rate is equal to K multiplied over A concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y, then order of the reaction is equal to X plus Y. Bunty, good morning. Then there are different problems. We had already discussed the order, and order can be 0 or fraction, but it never exceeds 3. But molecularity cannot be 0 or fraction. And order is determined experimentally, but molecularity is determined theoretically. For order, all the steps involved are not necessarily required, but for molecularity you have to know all the steps. And for a multi-step reaction, the order are different for different steps. But for a multi-step reaction, the molecularity is same. Molecularity same थाए. जेतोले बहुत सारा स्टेप थाए. एगुड़ा का हमें ऑलरेडी तौलो दिने पढ़ी सारिचे लास्ट क्लास रे. ऑर्डर के बेले मेकानिज्म से तो रिलेट करेनी, किंतु मोलिकुलारिटी सबले मेकानिज्म से तो रिलेट करता है. तापर हम देखथिले रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो एग्जांपल होची जेते सब मेटल मीडिएटेड रिएक्शन आ तुमारो जेते फोटोकेमिकल रिएक्शन जोटी कंसंट्रेशन एक्चुअली माने रेट ऊपर किछि प्रभाव पकई न थाए. तापर फर्दर जदि देखिबा रेट लॉ अनुसार dx is equal to k naught dt आ ए अनुसार हम डिराइव करथले दैट k naught is equal to x by t. व्हाट इज x? x is equal to change in concentration. केते concentration actually changes and its unit is mole liter inverse second inverse. तो दीटा अलगा अलगा पार्ट करके हमें याको करथिले एवला करके इक्वेशन 2 जोड़ा तुमको कन्वीनियंट लागिवो तुम्हें यू कैन गो फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एज पर योर कन्वीनियंस. अब हाफ लाइफ देखथिले जे हाफ लाइफ होची कोन ना the time at which the initial concentration of the reaction becomes half अधा हो जाए. And we have already derived T half is equal to A by 2 K naught. बहुत कम पिला आछन पिलांक संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि. ठीक समस्त को इनवाइट कर दियो सो दैट समस्त आसीबे. आ से अनुसार जदि हम देखिबा ग्राफ को जदि हम देखिबा जे concentration of A जेतेबेले बढ़ुछि A रो concentration gradually कमी कमी जाउछि टाइम बढ़िबा द्वारा. फर्दर T half जदि हम देखिबा T half of A रो value, T half value increases as the value of A also increases. Okay, ये इसके बहुत दिन पर क्लास होचे आ अनुसार हमें किछि प्रॉब्लम करथले जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर भी हमें क्वेश्चन देखथिले. फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल किछि नैथिले आ से अनुसार हम जब देखिबा फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन कोन आस्तिला that k1 is equal to 2.303 by t log a by a minus x. हमें एतिकी जाय डिराइव करथिले. बर्तन हमें हाफ लाइफ पीरियड को जिबा. ठीक अछि. तो एठी हमरो इनडेफिनाइट डेफिनाइट इंटीग्रेशन रो हमें सॉल्व करथिले इक्वेशन 2. बर्तन हमारो काम होला इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. जदि तुमरो
ଯେମିତି ତମକୁ କନଭିନିଏंट ଲାଗିବ। ସୋ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କନଭିନିଏंट ଲାଗିବ ସେଇ ୱେରେ ଯିବା ଯେ ଆମକୁ ଇକ୍वेସନ 2 ଡିରାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍वेସନ 1। ଇକ୍वेସନ 1 ହଉଛି dx by a minus x k1 into dt। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲିମିଟ ନ ଦେଇକି ଡେଫିନାଇଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରେ ଆମେ ନ କରିକି ଇନଡେଫିନାଇଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଇନଡେଫିନାଇଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ରେ ରହିଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। So ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ। ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବୁଝି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ନା ଇକ୍वेସନ 1 କୁ ଆମେ ରିଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଇକ୍वेସନ 1 କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିବା। So integrating equation 1 we get integrating equation 1 एटा लिमिट दबानी ताले हमर कोन आसीबो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेशन कले ना एठी तुमर कोन थिला dx by a minus x is equal to k1 into dt। so integration over dx by a minus x is equal to k1 into dt। similar way रे हमें सॉल्व करिबा। तो dx आमे जानि dx by a minus x को सॉल्व करिया वाला हम कोन नबा पड़ियो। लेट्स a minus x is equal to z नबा। z नेले ताले आर डेरिवेटिव a रो डेरिवेटिव होची 0, x रो डेरिवेटिव होची 1 और dz होची dz by dx। बा में लिख परिबा 0 minus 1 is equal to dz by dx बा minus 1 is equal to dz by dx बा dx is equal to हम लिख दे परिबा minus dz। dx is equal to minus dz एटा हमें एठी यूज करिबा। ठीक अछि मो टिके शॉर्टकट रे कर देली। ताले dx बदल रे हमें minus dz, a minus x बदल रे हमें z, इंटीग्रेशन साइन k1 बाहर को आस जीवो देन इंटीग्रेशन ओवर dt। हमें एटा जानचे जे minus dz by z होची कोन फार्मूला ln z। ऑलरेडी हमें तळ क्लास रे पढिचे माने या प्रीवियस क्लास रे भी पढिचे। तळ माने तम भाबियो सर आपण कोन ऊपर बसचंदी कि तळे आउटे कोन क्लास होची कि नाइ नाइ तळ क्लास माने प्रीवियस क्लास उठा कहछि मु। ठीक अछि माइनस ln z इज इक्वल टू k1 into t plus c। पिला माने एटे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसीबो कारण एटा गोटे की इक्वेशन एटा होची गोटे इनडेफिनाइट इक्वेशन। सो एटा मु 2a दे देउछि। ठीक अछि 2a। let me give us 1b not 2a। 2 फाइनल दबा हला फाइनल को 2 दबा तो 1b दे दोछि ln z। बर्तमान हमें मु कोन करबी c रो वैल्यू बाहर करबी। अच्छा एठी आउरी भी पडिबो माइनस ln z जगह रे a minus x पडिबो। a minus x is equal to k1 into t plus c एटा को हमें दे दबा 1c। 1c दे दबा तमे कहबो सर आपण a minus x z is equal to क्वाड जानले a minus x ऑलरेडी हम नहीं थिले सेटा पकेले। ठीक अछि बर्तन तापर हमें कोन करबा ना ए जो जिंस रहछि एठी हमें वैल्यू पुट करबा कार वैल्यू ना जतले t is equal to 0 जोटा कि हमर इनिशियल कंडीशन। तो हमें अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कौन थिला पिला माने मु कहि रखुची ए पार्ट तमे एदर इनडेफिनाइट पार्ट नले डेफिनाइट पार्ट जे कोनोसी गोटे ही एग्जाम रे लिखिबो। दीड जाके जदि लिखिबो तुमको से टीचर अधिक मार्क दे देबे नाही बरम विरक्ति की कहबे ए पिला कोन दी थर लिखुची ता माने पिला को आसुनी आउ किछि क्वेश्चन रो आंसर आसुनी केवल ए क्वेश्चन रो ही आंसर ता आसी तेनो ए खाताटा को भर्ती करिया पे एटा ही लिखुची। ठीक अछि जोड़ा जे कोनोसी गोटे ही लिखिबो ताले हमें फर्दर कोन करबा माइन t is equal to जेतले 0 थिबो when t is equal to 0 थिबो जेतले t कोन थिबो 0 माने टाइम स्टार्ट ही नथिबो रिएक्शन स्टार्ट नै नथिबो जेतले x is equal to कोन थिबो 0 थिबो x is equal to 0 हले ताले कोन हो बेटा माइनस ln a minus x जगह रे a minus 0 हला is equal to k1 into t plus c। ठीक अछि k1 into t plus c ताले माइनस ln a is equal to k1t plus c। सॉरी t जगह रे हमर 0 पडियो पूरा राइट t जगह रे 0 पडियो सॉरी
তাহলে এটা কোন হবে 0 প্লস সি। তাহলে সি ইজ ইকুয়াল টু কেতে আসলে আমার সি ইজ ইকুয়াল টু মাইনস লন এ। সি ইজ ইকুয়াল টু মাইনস লন এ। Let me put this in equation number. Let me put this as 1d. 1d बोलिकी नहीं जाउची 1d को हमें पुट करिवा 1b c रे putting 1d in 1c we get putting equation number 1c in 1d in 1c we get कौन पाइल जहाँ पाइल ताहा लिखियो और कौन पाइल माइनस लॉन a माइनस x इज इक्वल टू कौन हम इज इक्वल टू k1 इंटू टी k1t को k1t सी जगह हमें पुट करवा कौन माइनस लॉन a बस माइनस लॉन एटा राइट लेफ्ट साइड को पळेसले प्लस लॉन a माइनस लॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1 इंटू टी फर्दर हमें लिख दे परिवा जे लॉगरिथम रो प्रॉपर्टी थिला log a माइनस ln b कोन हो ln a माइनस b ln a by b सो एटा कोन हिजबो ln a by a minus x इज इक्वल टू कोन हो k1 into t वर्षा पळै जो परे आसीबो क्लास करिवो k1 into t इज इक्वल टू ताले कोन हो ln को मु log रे कन्वर्ट करले 2.303 log a by a minus x ବର୍ଷା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ କଣ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବ ବର୍ଷା କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି କଣ ରେକର୍ଡିଂ କଣ ମାନେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ଇଏ କରୁଛ କି ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବ କଣ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ହେଲା କୋଉଠି ସୁଟ କରୁଛ କି ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବ इक्वेशन नंबर 2 ହେଲା इक्वेशन नंबर 2 ହେଲା इक्वेशन नंबर 2 ଆମର এই वे ରେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଆସିଯିବ ୟୁନିଟ କଣ यूनिट ऑफ k1 यूनिट ऑफ k1 कौन हम यूनिट ऑफ k1 देखो 2.303 रो यूनिट कौन कहबो नंबर नंबर के यूनिट हेलानी आपण हम पाठ पढौछन्ती तो 2.303 रो यूनिट किछि नाही टाइम रो यूनिट कौन टाइम रो यूनिट होची 1 बाय टाइम टाइम माने होची सेकंड सो 1 बाय सेकंड माने सेकंड इनवर्स हला अच्छा log a बाय माइनस x एटे ऊपर मोल तळे भी मोल लीटर इनवर्स तो कटि जीवो कटि गेला माने लॉगरिथम भीतर जहा रहला तार किछि यूनिट नै सो ओनली सेकंड इनवर्स बुझी गेला ठीक अछि तापर मु रे ट्रिक कहबी यूनिट केमदि बाहर करिया पई हला ए गला तापरे हमें जीवा अधा जीवन जीवा हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड तमे माने आमे समस्त जानिचे अधा जीवन जेमदि कहया गले कार अधा जीवन किए केते जान नथिबो सेतिमे कैलकुलेशन करिया गले हमको निहाते भाबे आम मानकर रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करिया पड़ियो जे आम मानकर रेट एक कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन कोन तार जाय कि जे जा लाइफ रो हाफ लाइफ बाहर कर परियो से जाओ गोटे एवरेज जदि जने एवरेज 100 इयर्स आमे कैलकुलेट करबा ताले आधा जीवन होची 50 इयर्स तो हाफ लाइफ पीरियड होची आधा जीवन आमे ऑलरेडी जानचे हाफ लाइफ पीरियड कोन द टाइम एट व्हिच the initial concentration कौन हम initial concentration decreases to half कमी जीवो अधा ही जीवो decreases to half is known as half life period दीड जार डेफिनेशन न लिखिले भी चलिबो
ठीक अच्छे हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन सबुडारे न लिखले भी चलियो ताले आम जो देखा व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ जो हाफ लाइफ टी टा कौन हो टी हाफ से एक्स कौन हो ए बाय टू कारण अधा सरथिबो एटा दीट जा कंडीशन रे व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू अधा ही सरथिबो आमे सेकंड ऑर्डर भी जदि हमें हायर क्लास रे करछे तो ए भलिया वे रे ही सॉल्व करा हबो ठीक अछि टी इज इक्वल टू टी हाफ एक्स इज इक्वल टू कौन आसीबो ए बाय टू ताले देन k2 इज इक्वल टू कौन आसीबो k1 इज इक्वल टू 2.303 by t half log a by a minus x जगह a by 2 which is equal to आथरे कौन करबा ना 2.303 by t half into log a को a by a minus x जो अछि a minus a by 2 अछि a by 2 a by 2 होबो कोन 2 ताले 2.303 into log 2 by t half log 2 रो वैल्यू पिला माने मन रख 0.3010 कारण तुमको सब बेले ए चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर रे सॉल्व कला बेले log 2 log 3 log 5 ए तीनटा वैल्यू मन रखिया को पड़िबो log 2 होची 0.3010 log 3 होची 0.477 log 5 होची 0.699 बा 0.7 तो ए दिटा को जदि मल्टीप्लाई करबी मु मल्टीप्लाई कर देथिली तेनु मल्टीप्लाई करी डायरेक्ट कर दूची एटा आसीबो 0.693 by t half लेफ्ट साइड मोर थिला कोन k1 so k1 is equal to 0.693 by t half but t half is equal to 0.693 by k1 देखो पिला माने गोटे ह्यूज डिफरेंस कोन रहिछि ह्यूज डिफरेंस ना टी हाफ जदि हम देखिबा टी हाफ जीरो ऑर्डर रे टी हाफ रो वैल्यू जदि देखिबो इट इज a by 2 k नॉट माने k नॉट सहित कोन करतला इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला कोडा टी हाफ रो वैल्यू बट k रो एक्सप्रेशन जे देखिबा k नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x थिला k नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x थिला ठीक अछि किंतु एठी हमें जदि फर्दर देखिबा k1 is independent of x देखो k1 is independent of x केमती ना k1 only depends upon time x ऊपर independent कहा गले नाही कहा गले तो k1 आउ हम जे देखिबा t half कोन t half is also inversely proportional to k1 t half is also inversely proportional to k1 ए बळा रहिछि ताला हम जिबा ग्राफ करिबा यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोन हबो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 equation 3 represents the half life period of a fast order reaction ग्राफ जदि हम देखिबा ग्राफ रे प्रथमे इटी ग्राफ रो बहुत सारा ग्राफ डिफरेंट ग्राफ रहिछि खास करके जो हमें फास्ट ऑर्डर कथा कहबा तो फास्ट हमें नबा ना logarithm of a log a versus time log a versus time तो जदि हम देखिबा जेतेबेले टाइम बढ़ी बढ़ी जाउची लॉगरिथम ऑफ ए रो वैल्यू कमी कमी आछी काहे कि ना ए रो वैल्यू कमी कमी आसीबो एडा प्रथमे एडा सपोज थिबो एडा प्रथमे 5 मोल थिबो किस समय परे 4 मोल हे जिवो किस समय परे ए रो वैल्यू 3 मोल हे जिवो माने कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कमी कमी आसीबो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी कमी आसीले लॉग रो वैल्यू भी कमी कमी आसीबो सो अल्टीमेटली एभला कमी आसीबो तो इतमें इडा एभला करला में with increase in time the log a value decreases अब एठी हमर स्लोप कोन आसीबो स्लोप इज इक्वल टू माइनस k1 अच्छा एपटे हम आउ गोटे ग्राफ करिबा कोन कोन ना log a by a minus x versus t log a by a minus x versus t
ताले एठी हम जो देखिबा फर्दर कोन हम ग्राफ रो ना जेतबेले हमें एक्सप्रेशन देखो ना k1 into t is equal to 2.303 log a by a minus x एठु हमें नबा एठु हमें जदि पुट करबा ताले कोन आसीबो ना 2.303 log a minus x by log a by a minus x is equal to केते आसीबो ताले ना k1t divided by 2.303 जेतो हमें k1 versus t नोचे ताले k1 by 2.303 into t आसीबो ता माने y इंटरसेप्ट हमर 0 आसीबो y इंटरसेप्ट जदि 0 आसीबो ताले कोन हबो पासिंग थ्रू ओरिजिन हबो ना बुझिलानी एटा एटा कंपेयर करियो y is equal to mx plus c तो c होची 0 m होची कोन m रो वैल्यू हबो k1 by 2.303 m1 रो वैल्यू हबो k1 by 2.303 ठीक अछि ए जिंसटा को हम एटे कंपेयर करबा कोपडे ग्राफ रे कंपेयर करले कोन पाइबा ना एडार वैल्यू t जेतोले 0 थिबो यार वैल्यू 0 थिबो ये बढ़ी बढ़ी गले यार वैल्यू बढ़ी बढ़ी जो तेणु एटा पासिंग थ्रू ओरिजिन आसीबो आ एटे स्लोप कोन आसीबो स्लोप हमें देखथिले जे k1 by 2.303 आसीबो एटे पॉजिटिव रहइबो किंतु यार आगडा रे नेगेटिव रहइबो बुझी हला तापर हमें जिबा नेक्स्ट आ कोन रहिछि ना आ गोटे ग्राफ रहिछि आ गोटे ग्राफ तमे कहबो ग्राफ ऊपर ग्राफ केते ग्राफ करोछन रखन ग्राफ आउ थरे सुनु ओके ठीक अछि सुनु देखो एठी तुमरो एक्सप्रेशन थिला कोन ध्यान देकी देखो एथरो म आउथरे बुझी दोछि एटा देखि दियो आउथरे बुझी दोछि ग्राफ टा केमदी केमदी कोन आस्तिला ग्राफ रो स्लोप केमदी आसिला आ y इंटरसेप्ट 0 माने पासिंग थ्रू ओरिजिन केमदी हला गुड मॉर्निंग दीप्ति श्री वेरी गुड मॉर्निंग सो फर्दर जदि हमें देखिबा एटे कोन हबो ना log a by a minus x is equal to कोन हबो ना k1t by 2.303 बा हमें एमिति भी लिख परिबा log a by a minus x is equal to k1 by 2.303 multiplied by t प्लस किछि नै माने 0 सो एटा को हमें कंपेयर करिबा y is equal to mx plus c हमें ग्राफ का का वर्सेस नहीं थे log a by a minus x वर्सेस t ताले log a by a minus x हबो y आ x जगह रे ग्राफ रे कोन पडियो t ताले हमर स्लोप ता कोन आसीबो k1 by 2.303 आ y इंटरसेप्ट ता 0 माने पासिंग थ्रू ओरिजिन तो y इंटरसेप्ट हम देख परछे 0 रु आसिला आ स्लोप आसिला k1 by 2.303 बुझियला सोनु एथरा ओके नेक्स्ट हम जीवा नेक्स्ट पार्ट को जे हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस केमदे हमें करबा हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस k1 माने हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस k1 देखो हाफ लाइफ t हाफ k1 is equal to कोन फार्मूला थिला k1 is equal to 0.693 by t half so k1 versus हमर एठे t half जदि नबा t half वैल्यू जेतोला हम देखिबा t half रो वैल्यू सपोज 1 थिबो ताले k1 रो वैल्यू केते हबो 0.693 सो मैक्सिमम वैल्यू k1 रो 0.693 t half रो वैल्यू जेतोले 2 हबो तार आधा हे जिवो t half रो वैल्यू जेतोले 2 हे जिवो ता माने ग्राफ टा ए भले आसीबो ग्राफ टा ए भले आसीबो जेमिति तुमरो ए रे ग्राफ आस्तिला कोठी अवश्य सेपटे किंदे ग्राफ आस्तिला देखियो पड़ियो सेठी अलगा ग्राफ आस्तिला 2k नॉट into t half a is equal to आस्तिला हमर अवश्य a versus हमें t half नहीं थिले k नॉट versus t नहीं नथिले a versus t half बट एठी हमें कोन कोन नबा एठी हमें नबा जे तुमरो k1 versus t half ए भलिया आउ गोटे ग्राफ भी रहिछि आउ गोटे ग्राफ का का को नै करबा ना आउ गोटे ग्राफ रहिछि a माने concentration of a versus t half रिमेंबर एठी हमरो t half रो जदि हम देखिबा ग्राफ टा माने कांस्टेंट रहबो कांस्टेंट काहे कि रहबो कारण
ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी हाफ भितर कौन सी रिलेशनशिप ना log a by a minus आउ टी हाफ भितर कौन सी रिलेशनशिप ना तेणु आम ये ग्राफटा रही यार टी हाफ रो वैल्यू कौन आसो 0.693 by k1 वैल्यू एति रोटे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ठीक अच्छे तो k1 जहाँ थी से अनुसार हम सो ये चारिटा ग्राफ आमर बेसी इंपोर्टाट एग्जाम पर्पज ये किसी ना कि पचारि पारे ठीक अच्छे ऊपर ग्राफ रो फास्ट ग्राफ रो तो किसी स्लोप नहीं आउ ए ग्राफ रो जदि आम स्लोप कथा कहबा ए ग्राफ रो स्लोप आसीबो कोन ना k1 into k1 स्लोप एठी भी माइनस 0.693 स्लोप आसीबो माइनस 0.693 माइनस 0.693 आसीबो ओके अब जीवा हमें किसी क्वेश्चंस करवा रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड नेक्स्ट वीक रु शुभम तमरो क्लास हबो डोंट वरी शुभम नेक्स्ट वीक रु सियोर क्लास हबो ठीक अछि सो हैव पेशेंस until there क्वेश्चन रही the rate constant किसी क्वेश्चंस करवा the rate constant for a first order reaction the rate constant for a first order reaction नेक्स्ट वीक रु माने आमे निहाती भाबे ट्राई करवा जे केबेडू तुमरो अक्टोबर मासरु the rate constant for a first order reaction involving compound A was found to be 0.082 minute inverse when the initial concentration of capital A was 0.15 mole per liter एग्जाम रे भी ग्राफ करिबु कि सर लकी जदि एग्जाम रे ग्राफ करिया पई कुआ हिथिबो करिवो अदरवाइज करिवा दरकार नै गोटे ग्राफ करिकि छाड़ दबो फर्स्ट ग्राफटा हाउ लॉन्ग will it take for the concentration of A to drop to 0.03 mole liter inverse तो केते टाइम लागिवो 0.15 टा 0.03 हबा को केते टाइम लागिवो आ गोटे रेट कांस्टेंट दिया हेची 0.082 मिनिट इनवर्स तो हमको बहुत सहज आंसर माने बहुत प्राय क्वेश्चन को इजी कर दिया हेची कोन दिया हेची ना k1 दे देची तुम्हारो केते 0.082 मिनिट इनवर्स k1 हमर एतिके आस जाईची आउ कोन रहिची ना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माने ए रो वैल्यू दे देची 0.15 मोल लिटर इनवर्स फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए होची केते a माइनस x दे देची 0.03 मोल लिटर इनवर्स हमको एठी कोन पचराइची t केते टाइम केते पचराइची ताले सॉल्व करबे यूज द फार्मूला ऑफ इक्वेशन 2 यूज करो जे k1 is equal to 2.303 by t log a by a minus x ठीक अछि k1 जगह रे पड़िबो हमर वैल्यू केते k1 जगह रे पड़िबो 0.082
is equal to 2.303 by t जगह हमको जाना नहीं t log a by a minus x a value केते a रो value 0.15 a minus x केते 0.03 तो 0.03 0.15 सॉल्व कले 5 आसीबो आ log 5 रो किस समय आगर मु कहउथिले वैल्यू होची केते 0.699 बा हमें 0.7 नै गले भी हे जो 2.303 is equal to 0.082 into t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले बुझियला ताले t is equal to केते आसीबो 2.303 multiplied by 0.7 divided by 0.082 एटा तमे निजे सॉल्व करिवो सॉल्व कले आसीबो 19.6 यूनिट रे आसीबो मिनिट बा 19.5 into something यूनिट रे मिनिट आसीबो सॉल्व प्राय तमे जो देखिबो केमिकल काइनेटिक्स रो क्वेश्चन गुडाको इजी थाए किंतु सॉल्व करियो लास्ट आंसर ता बहुत डिफिकल्ट होता है तो तमे जदी सॉल्व न करि पारछो टाइम जदी न मिलुची ताले 2.303 into 0.7 divided by 0.082 मिनिट करिकी छाड़ दबो एग्जाम रे कारण बेले बेले ए क्वेश्चन गुडा को एते लेंदी हिताए बा एते टाइम टेकिंग हिताए जे सॉल्व कर बहुत टाइम पड़े जाए तो से बेला केस रे तमे ताको कोन कर दबो ए बेला केस रे तमे सेठी सेही एक्सप्रेशन दा करिकी छाड़ दबो फाइनल आंसर न लिखले भी चलियो आ गोटे क्वेश्चन करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन what percentage of what percentage of what percentage of initial concentration of reactant left ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିडिଓ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି ମଜାଦାର କମେଡି ଭିडिଓ ସେଠି ସେ ମାନେ ଇଂଲିଶ କୁ ଏମିତି କହୁଥିଲା what percentage of initial concentration of reactant left in 2 hours in 2 hours for a reaction for a reaction whose rate constant is whose rate constant is 4.25 into 10 to the power minus 5 second inverse ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ତେଲୁଗୁ କି ତାମିଲ ଲୋକ ପଢିଥିଲେ କେମିତି ପଢନ୍ତି ସପୋଜ what percentage of initial concentration of reactant left in 2 hours for a reaction whose rate constant is 4.25 into 10 to the power minus 5 second inverse देखिवा क्वेश्चन रही कौन केते परसेंटेज रहिबो बा आमे पचराइछि a minus x is equal to dash percentage of a क्वेश्चन को सबले बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट लेफ्ट इन 2 hours 2 hours रहिछि माने हमरो टाइम दे देछि 2 hours सो 2 hour को हमें कोथरे कन्वर्ट करबा मिनिट रे बा सेकंड रे तुमको जेमिति इच्छा सेमिति करि परिबो सो 2 hour को हमें कोथरे कन्वर्ट करबा मिनिट रे कन्वर्ट कर दबा 120 मिनिट नहीं हमर सेकंड रहिछि ता माने हमको सेकंड रे आंसर करियार अछि ताले एटा केते जिवो 7200 सेकंड घंटे होची गोटे घंटा होची 3600 सेकंड बस से आंसर आला पर रिएक्शन उज रेट कांस्टेंट k1 केते देछि ना 4.25 into 10 to the power minus 5 second inverse सॉल्व करिवा कोन फार्मूला पको k1 is equal to 2.303 divided by t multiplied by log a by a minus x
तो आमको बाहर करबार अछि k1 जगह जार तारा मूल्य पकेबा k1 जगह पड़िबो मूल्य केते 4.25 into 10 to the power -5 पड़िला पके देली सर आपण कोन पकोचंदी कोन लेखुची बोली कहू नांदी पकेलु कोन कोन ये कोन छाडिलु ना कोन ऊपर छडा हला ना कोन पकेबा हम सुनथिबो ए सेटा पके देलु के ओडे ऊपर थिबो ए सेटा पके देलु तळगु तो ये k1 रो वैल्यू पड़ला 4.25 in 10 to the power -5 which is equal to 2.303 by t 2.303 by t log a by a minus x t जगह मु वैल्यू पुट करी t जगह वैल्यू पुट करी ओके भी नहीं पुट करी 7200 अच्छा पुट करी इंग्रजी रे सिने कहली ओडिया रे कोन हो ओडिया रे हो कोन मान स्थापना करी बसेबी एटा ठीक 4.25 into 10 to the power -5 multiplied by 7200 divided by 2.303 is equal to अब पकेबी नहीं मान स्थापना करी एते शुद्ध ओडिया तो एटा को सॉल्व कले केते हबो सॉल्व कले आसीबा हमर 0.1328 0.1328 is equal to log a by a minus x फोपाड़ीबा हबनी थ्रो माने फोपाड़ीबा ना पुट माने रखिबा फोपाड़ीबी माने एडी तार वैल्यू को फोपाड़ देली वाह क्या डायलॉग तो सॉल्व कले 0.1328 आ गोटे डाटा एटे दबार थिला देइनी मु दे दोची डाटा 10 to the power 0.1328 is equal to 1.358 ताले एठी हमें कोन कले ना वैल्यू पके वैल्यू एडे फोपाड़िले पकेले बा फोपाड़िले जहा करछ कर ताले लॉग टा एपड को पळे आसले कोन हे जो 10 to the power 0.1328 is equal to a by a minus x तमे देखिथिबो जे जदी लॉगरिथम रो किछ ओडे इनदी 10 to the power बा एंटी लॉग भी देई पारे लॉगरिथम रो आ गोटे अछि भी 10 to the power करी देइथे पारे बा एंटी लॉग करी देइथे पारे जदी एग्जाम रे देइछि माने सेइडा का आंसर आ करिया दरकार नै सॉल्व करिया प्रोसेस कर देलो तापरे डायरेक्ट पुट करो तो a by a minus x is equal to केते 10 to the power 0.1328 देइथिबो इनदी एग्जाम रे 0.1328 केते 1.358 सो इटा होची 1.358 किंतु हमको दरकार a minus x is equal to how much of percentage of a ताले हम एटा सॉल्व करले कोन हबो पुनी उतरे ना a minus x by a सॉल्व करिवा कले 1 by 1.358 1 by 1.358 सॉल्व करिवारो एटा एटा मु ऑलरेडी सॉल्व करछि बोली भाबिनियो हला सॉल्व करिवारो हमर आसीबो केते 0.7364 0.7364 परसेंटेज रे कले केते आसीबो 73.64 परसेंटेज तो हमर केते केते परसेंटेज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेफ्ट आउ केते परसेंटेज लेफ्ट हला सॉरी लेफ्ट आउ केते रहला एति की ताले परसेंटेज रिएक्टेड केते की रिएक्ट कला a minus x होची एति की ताले परसेंटेज लेफ्ट केते हो परसेंटेज लेफ्ट हबो 100 रो एडा वैल्यू माइनस कर दबो ताले केते हबो 10 रो 4 गेलो 6 3 9 रो 3 गेलो 6 9 रो 7 गेलो 2
So 26.36%. 26.36% ଆସିବ ଯେ ଏତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲେଫ୍ଟ ବା ଏତିକି percentage ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ଏତିକି percentage କେତେ percentage reacted ହେଲା that is 73.64%. ଓକେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦଉଛି ହୋମୱାର୍କ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବି ହୋମୱାର୍କ ମୋ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ क्वेश्चनଟା क्वेश्चन ଏମିତି ରହିଛି ଯେ the rate of a reaction the rate of a reaction the rate of a reaction is the rate of a reaction is 0.00693 second inverse calculate the half life ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କିଛି କୁହାହେଇନି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ calculate the half life ଏଟା କୋଉ ଅର୍ଡର ତମକୁ କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ଅର୍ଡର କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଠି ତ ଆପଣ ଅର୍ଡର କହିଲେନି ଯଦି ଜିରୋ ଅର୍ଡର ହେଇଥିବ ତ ଏଇଠି ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ତୁମର ରେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରେ ୟୁନିଟ କଣ ରହିଛି ୟୁନିଟ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ତା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପକେଇବ ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାହେଲେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ଲେଖିବୁ କେମିତି ଆରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକେଇବ ମାନେ ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ତମେ ୟୁନିଟ ଦେଖିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଡର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ର ଆମର ବେଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ପେପର ଆମେ କହିବୁ ମେଡ୍ସାଇ ଓଡ଼ିଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ତମେ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପଲ ପେପର ଆଣ ଓଷା ଏବିସି ଯାହା ବି ଆଣୁଛ ଆଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଟୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ ମେଡ୍ସାଇ ଓଡ଼ିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଷା ଆଣ ଏବିସି ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବିସି ବା ଓଷା ଯୋଉଟା ଆଣୁଛ ଆଣ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ is completed is 20% completed in 10 minutes is 20% completed in 10 minutes 10 minute रे 20% complete ହେଲା calculate the half life calculate the rate constant तीनटा जिनस रे हमको कैलकुलेट करियो पड़ियो हाफ लाइफ पीरियड तापरे टाइम टेकन फॉर 75% completion ए क्वेश्चन उडा क्वाइट इंपोर्टेंट देखिबा को माने करिके आस्थियो नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट क्लास माने आसंदा कली हबो कंटीन्यूअस हेबे विगरसली क्लास हबो डेली क्लास हबो अप टू संडे संडे परठू नेक्स्ट वीक टू तमरो क्लासेस मोर 3 दिन देवाचन सर न 3 दिन रहइबो मु फर्स्ट ईयर 11th रो क्लास अनुसार नेबी मॉर्निंग रो ठीक अछि तो ता भीतर हम भाबु छी चैप्टर को सारीबा पई जेमते हेले जति परिबी सारीबी अधिकार अधिका माने प्राय हमें प्राय पर्सन कवर करी करी आसिलेनी तथापि अधिकार अधिका क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा हो जेमते हमें स्मूथली पाठटा को सारीबा ठीक अछि ओके
नेक्स्ट क्लास माने आसंता काली पुणी देखा बा टिके जल्दी एथर आसीबा थैंक यू फॉर दिस क्लास थैंक यू ऑल ऑफ यू जीरो ऑर्डर यूनिट जदि हमें देखिबा जीरो ऑर्डर यूनिट ऑलरेडी मु पढेछि मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होछि तुम्हारा जीरो ऑर्डर यूनिट रेट कांस्टेंट यूनिट होछि जीरो ऑर्डर होछि तुम्हारा मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स देखि दियो तथापि भी बहुत बढ़िया रिवीजन करे देला भी जे पिला एटा तो केवल सोनूर क्वेश्चन नुह एटा समस्तଙ୍କର क्वेश्चन मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूनिट ठीक अछि ओके थैंक यू